फोर्थ चैप्टर है विस्टास बुक का द एनिमी। राइटर इसके पॉल एस बक। थीम है इसकी द एनिमी डील्स विद द conflict between men's human feeling and prejudices created by nations at war. It deals with the universal human values which must take precedence over never consideration like nationalism. The bond uniting all human beings must transcend the difference between nations. Summary here, the enemy tells the story of a Japanese doctor who had some American as a patriotic Japanese as America and Japan were at war. ये कहानी एक जापानीज डॉक्टर की है और उस समय की है जब अमेरिका और जापान एक युद्ध में थे. One day at an American prisoner is washed ashore in the front of a Japanese doctor's house. जापानीज डॉक्टर का जो घर था वो एक बीच पे था, तो वो समुद्र के किनारे एक अमेरिकन प्रिजनर वहाँ पे आ जाता है. द सोल्जर इज वाउंडेड हैज़ एविडेंटली escaped फ्रॉम प्रिजन. सोल्जर उसके ऊपर घाव थे और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी प्रिजन से भागा हो. डॉक्टर सदाउज हाउस वॉज ए सॉलिटरी हाउस ऑन द सी शोर. समुद्र के किनारे उसका एकमात्र घर था. डॉक्टर सदाओ एंड हाना ran टू हेल्प. द अमेरिकन सेलर वॉज ब्लीडिंग. उसके खून निकल रहा था. दे थॉट ऑफ थ्रोइंग हिम बैक टू द सी. एक बार वो सोचते हैं कि वापस समुद्र में फेंक देते हैं, बट दे कुड नॉट डू सो. डॉक्टर सदाओ कैरिड हिम होम. हाना वाश द सोल्जर एज अ यूमी. द सर्वेंट रिफ्यूज टू डू सो. उनके नौकर थे, तो यूमी एक नौकरानी थी, उसने ऐसा करने से मना कर दिया. हाना उसकी वाइफ है, तो वो उसके घाव को धोते हैं. Sadao operates on the American. He returned with his surgeon's emergency bag. He turned over the wounded soldier by who lay unconscious. He washed his back and asked Hana to help him. वो उसकी पीठ साफ करता है और हाना की हेल्प मांगता है. He wanted Hana to give the patient an anesthetic. Hana had never seen an operation and she felt like vomiting. हाना ने ऐसा कभी ऑपरेशन देखा नहीं था, उसको उल्टियाँ होने लग गई. Sadao saw the bullet in the wound. Hana observed that there were red scars on the soldier's neck and realized that he had been tortured. Sadao removed the bullet from the wound and declared that he American would survive. अब उसके गर्दन पे कुछ चोट के निशान थे, तो उसको लगता है कि इसको टॉर्चर किया गया है, और सदाओ ने उसकी गोली रिमूव कर दी. इससे उसने कहा कि अमेरिकन अब जिंदा हो जाएगा. Sadao and Hana look after the American, but the servants were becoming restless. The gardener felt the prisoners should have been allowed to bleed to death. On the seventh day, the servants leave Sadao's house. They didn't work that morning. Hana paid them their wages. They cried as they left. Hana held back her tears. The gardener was since he was boy. जो माली था वो तब से था जब वो बच्चा था, और यूमी बच्चों के साथ में अटैच थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. हाना हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क ऑन हर ओन. हाना को सारे घर के काम अपने खुद से करने थे, तो हाना ने सदाऊ को कहा कि इस अमेरिकन व्यक्ति से हमें पीछे छुटकाना पड़ेगा. Hana wanted Sadao to get rid of the American quickly. Sadao promised to do something about it. In the evening, a messenger in uniform arrived. Hana was paralyzed with fright. Hana डर गई क्योंकि मैसेंजर आया था ड्रेस में. She felt the servants must have a complaint that the messenger had come to arrest Sadao. The fear were unfounded as the old general had been suffering from the ailment. उनका जो जनरल था उसके बीमारी थी, तो बीमारी से वो जूझ रहा था, इसलिए वो सदाओ को चाहता था कि उसका ऑपरेशन करे. सदाओ हैड बीन ट्रीटिंग हिम एंड द जनरल वाज इन पेन एंड हैड सेंट फॉर हिम. जनरल ट्रस्टेड सदाओ. ही न्यू दैट ही माइट नीड बी टू बी ऑपरेटेड अपॉन. दैट इज वाई सदाओ वाज नॉट सेंट अवे विद द ट्रूप्स. सदाओ को अन्य टुकड़ियों के साथ में नहीं भेजता है क्योंकि वो कभी भी उसके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. सदाओ टोल्ड द जनरल अबाउट द अमेरिकन. अब वो अमेरिकन को के बारे में बताता है. जनरल रिप्लाइड दैट सदाओ वाज इंडिस्पेंसेबल एंड कुड नॉट बी अरेस्टेड. Then the general suggested a way out. He would send two of his private assassins to his house to kill the American quietly and remove the body. Sadao agreed to the plan. Sadao waited for 3 nights. No assassins arrived. The American was getting better. Then he thanked Sadao. Sadao found it difficult to keep the American in his house any longer. He was tired of waiting for the assassins to do away with the American prisoners. Dr. Sadao decided to help him to escape. Sadao provided him with his boat. He put food, water, and quilt in his boat, and also gave the American his flashlight. There was an uninhabited island very close to the shore. He told the American to sell the island. He could to live there, live
till he found a Korean fishing boat passed by the island. उसको एक बोट प्रोवाइड करता है, उसमें क्विल्ट रजाई रख देता है, पानी रख देता है, फ्लैश लाइट भी देता है उसको, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक आइलैंड था, वहाँ पे उसको भेज देता है और वो कहता है कि यहाँ पे कोरियन एक बोट आएगी, उस पर चढ़ जाना आप. He then he could seek help and escape to freedom. He warned the American not to make any fire. He could catch fish and eat it raw. उसने कहा कि आप मछलियाँ कच्ची खा सकते हैं, इसे पकाने के लिए आग मत जलाना. It was a moonless night when the Americans sailed away to the island. Sadao was again called by the general. He operated on the general. Sadao told the general that the prisoner had escaped. अब वो जनरल को बोलता है कि प्रिजनर भाग चुका है. जनरल रिकॉर्ड दैट ही हैड फेल्ड टू द assassins as he had forgotten to keep his promise. जनरल कहता है कि मैं हत्यारे भेजने भूल गया था, तो मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया. क्योंकि उस जनरल वो काफ़ी ज़्यादा क्रूल व्यक्ति था, परंतु उस टाइम उसको सदाओं की ज़रूरत थी, इसलिए उसको वो अथॉरिटीज़ भेज के और वो अरेस्ट नहीं करना चाहता था. ही एडेड दैट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म नॉट नो डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी. ही वॉज सिंपली अब्जॉर्व्ड इन हिज ओन अफेयर्स. तो वो कहता है कि ये देशभक्ति की कमी की वजह से नहीं है, ना ही कोई ड्यूटी में मेरी कमी हुई है, सिर्फ मैं अपने ही कुछ अफेयर्स में फंसा हुआ था. Sadao realized that he was safe, but he assured the general that he would ever remain loyal to him. As the American had left, the older servants returned. Things come back to the normal. Sadao remembered the Americans had hated him, but didn't know why he had saved the prisoner's life. अब इसमें सदाऊ के फादर का एक ड्रीम है. टुक हिम टू द आइलैंड एंड सेड दे वर स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान. Sadao realized education is important. At 22, went to America to study surgery and medicine. Returned at 30 as a famous surgeon and scientist, trusted by General Sue, not sent with troops. It's not so important. मीटिंग हाना और सदाओ की मीटिंग कैसे होती है? अमेरिका में प्रोफेसर हार्ली है, तो वहाँ पे उसकी हाना की मीटिंग होती है और उसके बाद स्टडी के बाद उन्होंने शादी कर ली. अपीयरेंस ऑफ अमेरिकन सोल्जर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Hannah and Sada were leaning on a railing. One fuzzy evening saw a man crawling on the hands and knees, fell on face, rushed thinking. Fisherman saw a white man with reopened gun shot wound. Badly hurt US Navy insignia on tattered uniform. Realized he was a prisoner of war. तो स्टेप बाय स्टेप इसको दिया हुआ है. डायलमा क्या थी? डायलमा पीछे 2022 में पूछी हुई है. डायलमा क्या थी? एज ए डॉक्टर ही शुड अटेंड टू द डाइंग मैन एंड स्टॉप द ब्लीडिंग. एज अ पैट्रियोटिक पर्सन ही शुड पुट हिम बैक इनटू द सी एंड और हैंड हिम ओवर टू द अथॉरिटीज. रिस्क क्या हो सकता है? वुड बी अरेस्टेड फॉर असल्टिंग एन एनिमी. ए वाइट मैन वुड इंडेंजर द लिव्स ऑफ देयर चिल्ड्रन. ये रिस्क है. रिएक्शन क्या सर्वेंट्स की? फ्राइटेंड, फेल्ट दे शुड नॉट हील हिम. गार्डनर फेल्ट दैट ही शुड डाई और ही वुड टेक रिवेंज. Cook felt pride in his skill made him save the American soldier. Felt their years in America had forgotten to think that of their country first. Left on the seventh day. Hannah's role क्या है? Hannah watched him help Sadao operate, give anesthesia, and felt nauseated but continued. General Takima was a cruel man known to be beat his wife mercilessly. Hannah feared how he would deal with an enemy. He trained Sadao in Japan as he could need an operation. What was the reaction to the information about the fugitive? Felt reassured. Sadao had capability to save. Wanted to save doctor as he would need his services. Suggested he would send two private assassins at night. Capable men, familiar with the trick of inward bleeding, would take the soldier's body away too. Sadao waited 3 nights. Realized general had forgotten. देन सदाओ हेल्प्स अमेरिकन एस्केप. सदाओ उसकी हेल्प करता है इसको बच निकलने में. पुट इज बोट ऑन द शोर एट नाइट विद फूड, बॉटल्ड वाटर, एक्स्ट्रा कूल्स एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग. टोल्ड हिम टू रो एन आइलैंड नियर द कोस्ट. ही इंस्ट्रक्टेड हिम टू स्टे द थ्री till there till a Korean fish boat was seen passing by. Gave him a flashlight and instructed him to signal with the two places before sunset. If he ran out of food, warned him to eat fish raw, as cooking over fire would be noticed. Wrapped a black cloth about his blonde head and dressed him in his Japanese clothes. That's it. Some of our points are there. What was the dilemma of Sadao? It has been asked in the previous question paper. What is the risk of the Sadao? And what was the reaction of servants? And what was the appearance of American soldier?